एंड पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म डिस्क्राइब किया. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट poly means many and morphism is form. So a function can have many forms. So that polymorphism is further classified into method overloading and method overriding. So method overloading is the property in which the method will have same name but the functionality will be different, and the number of parameters in order to identify which method we are calling. So that calling or that identification of method can be done by the number of parameters that we are passing. Okay. So अगर हमने पैरामीटर जो पास किया है वो एक है या दो है या उसका पैरामीटर का टाइप अलग है, so depending on that I can identify the difference between the different function that I have. So this feature is called as method overloading. What is method overriding? अगर एक class जो है which is my parent class, and from that parent class I've got a child class which is inheriting all the features of it. So it will inherit some function of it. सारे के सारे function वो भी inherit कर लेगा. लेकिन if you want to make changes into that function, so you can do that, but it will override the previous functionality. So जो भी predefined functionality थी, उस functionality को वो override कर देगा. Okay. So yeah, so I think yeah, this is MEP का topic. So I will just erase it. Yeah, just for because यहाँ पे एक topic था तो मैं सिर्फ आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ. Heard about timer? Has anybody heard about timer? Timer IC 555 सुना है आपने नाम? IC number 555. Heard about it? Has anyone? Okay, कोई बात नहीं. No, sir. Yeah, कोई बात नहीं. So yeah, जो टॉपिक मैं आज थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू टाइमर एंड काउंटर. अगर आपका माइक्रोवेव ओवन होगा उसके डिस्प्ले में और अगर आपके वॉशिंग मशीन में जो डिस्प्ले है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. एक में आप जो टाइमर सेट करते हो, जो भी आपने टाइम सेट किया है, जैसे ओवन में अगर आपने 1 मिनट का टाइम डाला है, सो एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद वो आपका अलार्म बज जाता है और वो वहाँ पे एंड कर देता है. वेयरएज वॉशिंग मशीन में अगर आपने टाइम सेट किया है, जो भी आपने सेट टाइम आपका एक डिस्प्ले होता है, उसमें बहुत फर्क होता है. वो डिपेंड करता है वाटर के प्रेशर पे, वो डिपेंड करता है बाकी सारी चीजों पे. So there is a difference between them. So that is a topic which is called as a timer and counter, which we'll be discussing in the next year. So yeah, so आज का जो topic है that is method overloading and overriding. After discussing method overloading and overriding, we'll be discussing a new topic. So that new topic is called as constructor. Okay, so just write on in your book, constructor. Okay, so what is a constructor? Constructor is nothing but it is a method. Constructor is nothing but it is a method. It is a method which has same name as that of a class name. So what is a constructor? It is a method only, but the only thing that it has is that it has same name as that of a class name. यानी जो class का नाम होगा उसी नाम का method का भी नाम होगा. Okay, then it will be considered as a constructor. So this is the first point. Second point is constructor does not have a return type. यानी generally method के पास return type होता है, which is void, int, float, void add, int add, float add. आप ऐसा लिखते हो. Whereas constructor के अंदर there is no return type. So the second point that a constructor has, there is no return type. Okay. So there will be no constructor with void, no constructor with int, or no constructor with float, etc. Okay, so there is no return type. The third most important point, and it is one of the most important, that is why we use constructor, is as soon as we create an object of a class, the constructor is invoked. The constructor is invoked. So what is the meaning? जैसे ही आपने object create किया, as soon as you have created an object, constructor जो है वो automatically invoke हो जाएगा. So the constructor will automatically get invoked. यानी वो call हो जाएगा. So उसको explicitly आपको call करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आपने object create किया, वो automatically call हो जाएगा.
Is it clear? Is this point clear? Yes. Yeah. So demonstration के लिए मैं अगर आपको दिखाऊं, so let's say this is my program. Okay. So that program has, yeah, it has a class area. That program, that class is called as area class. So I can have a constructor or I can have a method by the same name as that of area. Area के नाम का ही method रहेगा. So अगर वो method का नाम और class का नाम both are same, and if that method does not have a return type over here, so such method will be called as constructor. So इसके अंदर मैं इसका कुछ define करूँगा, कुछ definition लिखूँगा. I will end it, then I will create a main class या main function इसी के अंदर define कर देता हूँ public static void में. इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. सो एरिया का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए व्हाट आई विल राइट, एरिया ए इज इक्वल टू न्यू एरिया. ओके, एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया. जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, ऑटोमेटिकली एरिया मेथड कॉल हो जाएगा. सो आई डोंट हैव टू राइट ए डॉट एरिया. Okay, so that is the advantage that we get over here. As soon as you have invoked or you have created a class, you have created an object of a class, that area कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक. सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और आपका जो भी काम रहेगा वो कंस्ट्रक्टर करके दे देगा. सो दैट इज द एडवांटेज दैट यू गेट बेसिकली ओवर हियर. इज इट पॉइंट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. या. सो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट इट इज अ मेथड ओनली. बट वो मेथड की खासियत क्या है कि जो मेथड का नाम है और क्लास का नाम है, दोनों का नाम सेम होना चाहिए. ओके. एंड कोई भी कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता. इसका मतलब या कोई वॉइड रिटर्न नहीं करेगा, ना कोई इंट रिटर्न करेगा, ना फ्लोट रिटर्न करेगा. उसके जो भी डेफिनेशन होगा दैट शुड बी डिफाइंड इन द curly bracket only as we define in the method only. लेकिन the difference between method and constructor is that method has to be explicitly called. यानी method को अगर आपको कॉल करना है तो आपको उसका explicitly उसको कॉल करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्टर में ऐसा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, whenever you create an object, during that time only your what you say, during that time only your constructor is get invoked. Okay, so आपको बार बार वो करने की जरूरत, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती. Okay, you don't have to call the constructor, it is automatically invoked. Is it clear? Is this point clear? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So I will quickly just take an example. I will open the notepad. Yeah, so anybody faced any problem till now for writing the program या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे को अभी तक एंट्रीज काफी कम दिख रही है. जो आई थिंक आपको डेट पता है कि नहीं, 14th इज द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग योर असाइनमेंट. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दे कैन आस्क मी आल्सो रिगार्डिंग दैट व्हेन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल गेट्स ओवर. Yeah, so in this example we start with a class. Can you write down your the program for calculating the area? First write down the program for calculating the area. All of you do that. So how to write down the program for calculating the area? What should be done? कोई भी एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? What should be the first thing that I need to do? In order to write any program, what is the first thing that I need to do? Create Class. a class. Create a class. So I'll be creating a class by the name of area. Let's assume I'm creating a class by the name of area. So class area. So that is the name of my class. Okay. So area जो भी class होगा that should be defined within the curly bracket. So curly bracket के अंदर इसका definition लिखेंगे हम लोग. In that I need to create a method which will be calculating the area. Okay, so वो area ही calculate करेगा. For that I am be creating by the name of area itself. Okay, so area नाम का एक मैं method create कर दूँगा. Okay, so अगर वो area नाम का ही method होगा, then that area will be considered as a constructor or it will not be considered as a constructor. Will it be considered as a constructor? Constructor. It will be considered as a constructor because the function has the same name as that of a class name. Okay, so इस वजह से इसके अंदर जो भी आप लिखोगे that would be considered as a constructor. And as it becomes a constructor, uh, जब भी आप इसको इसको ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, whenever you want to create an object of area class, it will be automatically in.
Am I audible? Yes, sir. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. आज का नेटवर्क मेरा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है. I don't know what is the reason. Yeah. So what is over here? What we can define is I can create कोई भी मैं एरिया का एक लेट्स से मुझे लेंथ एंड ब्रेथ लेना है एंड उसका कैलकुलेट करके एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मुझे कैलकुलेट करना है. So I'm taking length as and okay, I'm not taking as from the user. I'm directly initializing it over here. And breadth is equal to 20. I'm initializing that. Then area or int rect area, which is the rectangle area. I'm creating a variable, and that is equal to length into breadth. Okay. ये करने के बाद I will just display it system dot out dot print ln, and I will just print the values of rect area. So I will just write down over here a few things. The area of rectangle is plus rect area. Okay. So after doing that, yeah, I will come out of that area function. I will define the main function. So main function is written down as public static void main in bracket string args, or you can write down just a. No issue with that because a is a variable of string type. Then yeah, so I'll start the curly bracket. Within the curly bracket, I will just write down. I will create. I have to call that area function. Okay, so in order to call that area function, I just need to create an object of area. So area object कैसे create करेंगे? What is the function? How to create an object of area? Area object name I can write down a1. Okay, is equal to new area. So this is how we create an object. Okay. So as soon as I've created an object, automatically वो function invoke हो चुका होगा. Automatically वो constructor invoke हो जाएगा. Okay. So I'll just save the program and I will just check it कि ऐसा हुआ है कि नहीं. Okay. Are we getting the output or not? Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So basically what happened in third year में आज मैं lecture ले रहा था and 5 मिनट तक मैं continuously बोलता रह गया और मुझे पता नहीं था मेरा connection lost हो गया. So अगर ऐसा कुछ हो तो please inform me. Okay. Either on WhatsApp you do inform me somewhere. Yeah. So I have saved the program. I will just quickly open my run window and then I will open the CMD. Okay. So in CMD currently I'm in C drive. So I have to go into the D drive. So D colon I am right now in D drive. हाँ, किसी लोग अभी तक कुछ लोगों को भी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने में अगर दिक्कत आ रही है सो प्लीज इन्फॉर्म मी. एनवायरनमेट वेरिएबल करने के लिए अगर सेट करना है आपको तो आपको जो पाथ है दैट पाथ शुड बी सेट ऑफ JDK नॉट ऑफ JRE. ओके, रिमेंबर दैट. सो JDK इज जावा डेवलपमेंट किट एंड JRE इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. ओके, सो रन टाइम एनवायरनमेंट आपको सेट नहीं करना है. आपको जो पाथ सेट करना है वो जावा डेवलपमेंट किट का पाथ सेट करना है. ओके, सो JDK के अंदर जावा है और JDK के अंदर जावा सी है. उस पाथ का उसका पाथ आपको देना है. So when you set for the environment variable, set the path of JDK, not of JRE, वरना वो error ही देगा आपको. So remember to do that. Okay. So D drive में currently I have to go into a Java program folder. So yeah, I've gone into the Java program folder. Then I need to compile the program by the name of area. So yeah,
So area.java. I'll just press enter. Program has been compiled without any error. So I'll just run it. So Java area. So it will do what? What will be the outcome of it? Output क्या होगा इसका? It will calculate what? It will multiply what? Length and breadth will get multiplied, and that value will be stored in rect area, and finally the area of the rectangle is equal to what will be the value? 200. Okay, so I'll just press enter, and the answer is coming as the area of the rectangle is 200. So instead of calling the method, I can perform that thing with the help of a constructor only. So constructor की मदद से बिना उसको कॉल किए, बिना मेथड को कॉल किए, I can directly do that work. Okay, so that is the advantage that I get over here. Because of the constructor. So I don't have to call it explicitly. I can do it just by making an object and automatically invoke a time. Is it clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So constructor can be again of two type. One जैसे method भी है दो type के हैं. Method can be also of two type. Similarly, constructor can be also of two type. What are the types of method that we have? A method is a method with parameters, and another method is a method without parameters. So अगर आप area के अंदर कोई parameter pass कर पाते हो, okay? So in that case, जैसे कि अगर let's say मैंने इस एक area के अंदर int a मैंने pass किया, and that constructor is defined for creating a constructor for circle. Okay, so जैसे अगर मैं circle के लिए अगर बनाऊं एक constructor, उसके अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊं, सो int area, not int area, अगेन एरिया करके मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करता हूं, int a, int b. सो these constructors are called as parameterized constructor, यानी इसके अंदर पैरामीटर है. ओके, so this constructor I can use it for creating calculating the area of a rectangle. Okay, so मैं दो कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, दोनों का नाम सेम है. अगर ये मेथड होता तो व्हाट वुड हैपन? किसका ओवरलोडिंग होता? ओवरलोडिंग होता, ओवरराइडिंग होता? व्हाट वुड हैपन अगर ये मेथड होता? Overloading. It would be method overloading. Overloading of method would happen. Over here, what is overloading? Method or constructor? Constructor. We have a constructor over here by the name of area and area. Both are getting overloaded. Okay, so किसको कॉल करना है? It depends on the parameter that we are passing. So अगर मैंने area a1 is equal to new area and let's say मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया, डायरेक्टली मैं पैरामीटर इसके अंदर ही पास करूंगा. सो अगर मैंने 5 पास किया तो ये किसको बुलाएगा? पहले वाले को या दूसरे वाले को? इस कंस्ट्रक्टर को पास करेगा वैल्यू. द फर्स्ट वन और सेकंड वन? First one. First one. First. फर्स्ट वन. और अगर मैं एरिया a2 अगर मैं पास करता हूँ, आई एम क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट एरिया a2 is equal to new area, and in that bracket I pass let's say 5, 10. In that case it will be calling which constructor now? It will be calling which constructor? It will be Second calling and the second one. It will be calling first and second. Yeah, good. So it will be calling first. The first instruction will be calling the first constructor, and second instruction will be calling the second instructor. So all of you, please write down the program for calculating the area of a rectangle and a circle by using constructor overloading. Okay, so this is the program that I want you to write down right now. Is the program clear? What is the question? The question is write a program to calculate area of rectangle and circle with constructor overloading. Okay, so what is constructor overloading? If you're using multiple constructor in a same program, so that is called that constructor can have the same name because constructor will have a same name. So constructor का नाम same है, but you can identify them on the basis of the parameters that you're passing, and their functionality will be different. So constructor can have same name, but the functionality can be different. Okay, so you have to explain that. You have to explain this concept with the help of a program. So आपको वो कैसे explain करना? You have to write a program to calculate the area of a rectangle and circle with the constructor overloading. So make two constructor, one for calculating the area of a rectangle, other for calculating the area of a circle, and try to call the respective constructor with the help of parameter that you're passing in it. Is it clear? Is the point clear?
जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज आपको राइट करके दिखाना है, और आपको आउटपुट में जो मैंने आउटपुट में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी कैलकुलेट किया था वैसे आपको एरिया ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको वहाँ पे प्रिंट करना है. Is it clear, guys? Yes, sir. Yeah, so just try to do it. And those who have faced problem in the first, second, and third program in your lab, they can share your screen and I can solve your problem. So बाकी लोग जिनको problem face नहीं हुआ है, they can start writing this program. Rest of you guys can share me your screen. So quickly I will just check कितने लोगों ने submit किया है अभी तक. Oh, sorry, it should be faster. तो currently अभी तक 9 लोगों ने ही submit किया है. Okay, so please submit it as soon as possible. So whatever the problem that you're facing, you can get it cleared right now. So anybody facing a problem? किसी को कोई problem face हो रहा है? It is a practical session, so every time we'll be slowing it down a bit क्योंकि मेरे ख्याल से next week से आपका practical class होगा. So we'll not be having a 56 या 57 student का batch नहीं होगा. We'll be having a 20 के batch में we'll be dividing our student, and on that basis आपका practical session होगा. So yeah, so next class में जब भी हम next week में हम मिलेंगे, so that in that will be having only 15 or 20 people in a batch. Okay, so आज सब साथ में है, so please if you are facing any problem you can ask it out right now. सर हाँ, yes. सर वो आपने जो एक्सपेरिमेंट दिया उसमें थर्ड वाले में एरर आ रहा है, वो क्लियर? Okay, so third वाला program जो आपका था, that was I think write a Java program that is what it calculates what does it calculate? हाँ, quadratic equation. So इसमें error किधर आ रहा है अभिजीत? रियल सोल्यूशन का जब भी हाँ, हाँ. सोल्यूशन निकालते हैं ना तभी. बट कैलकुलेशन में एरर आ रहा है या एरर आ रहा है एज इन सिंटैक्स एरर आ रहा है? सर उसमें बोल रहा है कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिसिंग है और ये ओके, सो देयर माइट बी इशू कि अगर आपने इफ कंडीशन लगाया होगा तो इफ का जो नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टार्टिंग और क्लोजिंग वो है ब्रैकेट है, वो आपने गलती से एक कम ज्यादा कर दिया होगा. सो प्लीज चेक, जितना आपने ओपन किया है उतना क्लोज भी होना चाहिए. सो डू चेक दैट, और कहाँ पे ओपन हो रहा है कहाँ पे क्लोज हो रहा है वो सब एक बार चेक करो ब्रैकेट का. तो ब्रैकेट में इशू हो सकता है. ओके, सर 2-3 बार चेक किया बट मुझे तो हाँ ठीक है, फिर प्रोग्राम शेयर कर दो मुझे. यू कैन शेयर द प्रोग्राम इज पॉसिबल. सर हाँ बोलो पराग. सर अभी जो टास्क दिया आपने रिपीट करो ना थोड़ा, तो मैं सुन नहीं पाया. हाँ अभी जो ओके ओके द टास्क that I've written, you can look over here. So it is write a program to calculate the area of a rectangle and circle with constructor overloading. So you want to perform a specific program, and that is for the constructor overloading. And वो करने के लिए दो constructor आपको बनाना है. एक constructor area of rectangle निकालेगा, एक constructor area of circle निकालेगा. Is it clear? ओके सर. Yeah. So last time जो हमने एक program किया था वही वैसे ही program है, as similar as that. The only difference is that वहाँ पे हमने method overloading किया था, यहाँ पे हम constructor overloading करेंगे. So the difference between method and constructor is that if a method has same name as a class name, then it will be called as a constructor. Method constructor का कोई return type नहीं होता. And lastly जब भी हम object create करते हैं, constructor directly invoke हो जाता है, उसको explicitly call करने की जरूरत नहीं होती. So that is the difference between method and a constructor. ओके सर. Okay? यस. Yeah. Yeah. So Abhijit, if it is possible, you can share this screen. I will be stopping my presentation. You can share now. Okay. So the error that you are facing is JavaScript bracket expected that the solution of the quantitative equation is C. Okay. जो ठीक है, आपका प्रोग्राम भी दिखाओ मुझे साथ में.
You can share your entire desktop, और desktop पे जो भी करोगे that would be visible to you. So एक एक विंडो करने की जगह, हाँ, तो आप यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हो? Let's see, is okay. Deselected. The solution are the real and the quadratic equation. Let's see. The solution of the quadratic equation plus a, यहाँ तक आपने कॉमन रखा a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस तक आपने प्रिंट किया, फिर b की वैल्यू फिर x प्लस तक आपने प्रिंट किया, फिर c की वैल्यू यहाँ पे c प्लस c जो आपका है which is the last line from fourth line from last. Take your cursor till c. Take your cursor till c. Last line जो आपका system.out.println this solution of the quadratic equation वाला जो line है आपकी, solution of the quadratic equation ax square plus bx plus c, हाँ वह जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे एक हाँ जहाँ पे आपका कंट्रोल है plus c r x plus c, हाँ c के बाद एक प्लस डाल दो, after c put a plus over here, yeah put a plus. So अब जो है c की वैल्यू प्रिंट होगी, then r की वैल्यू would be basically would be printed as it is, and finally ये पूरे का पूरा वैल्यू प्रिंट होगा. हाँ save the program and compile it. Try to compile it. कंपाइल करो वापस अभी जो. अभी तो उल्टा चाह रहे रहा है. Just a second, I have a call. Guys, just a second. I think Anita ma'am, the current HOD, will be joining in the meeting. So I'll be sharing the meeting code with her. हाँ अभिजीत, कितना एरर आया? ओके, तो अभी मतलब वो एरर सॉल्व हुआ ना कि कोई उस पे ही और वापस से एरर? जरा यहाँ पे जो सेकंड वाला एरर है यहाँ पे देखेंगे अगर तो यहाँ पे आ रहा है कि कैन नॉट पुट प्लस करके कुछ ऑपरेटर प्लस आप एक काम करो ना, इतना जो बड़ी बड़ी वैल्यू आपने लिया है ना, वेरिएबल डाला है, उसको एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले लो, उससे वो वेरिएबल वहाँ पे पुट करो ना. So why you are putting all the calculation? You are making unnecessary. Your statement is complicated. So try to make it as simple as possible. और वहाँ पे वो डालें. हाँ. ठीक है सर, ट्राई करके देखो. Oh, sir, I must, sir. हाँ. I must, sir. Yeah, just take the pot, sir, please. Yeah. Students, you will be having your unit test on 17th, 18th, and 19th. Okay, 17th, 18th, and 19th, you will be having your unit test. Where on 17th there will be 2 papers, whereas on 18th 1 paper, and on 19th 2 papers. Okay, so you can understand your DSA problem. So DSA paper will not schedule now.
Okay, we'll schedule it later on as per your syllabus, syllabus coverage and all this. So according to that, 17 you are keeping one paper. So 17 you have two papers. So the first paper is M3. M3 को हम लोग touch नहीं कर सकते. M3 will be there from 10 to 10:40. Don't worry, you'll get the timetable properly. Just I want to take the preferences from your side. That's why I enter into the meeting room. Okay. So on 17, which paper you want after M3? Which subject you are feeling that कि M3 के बाद ये subject हुआ तो चलेगा? PCPF. DBMS. 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 See listen, the M3 is a little bit difficult, and you according to me, you should select the subject that will be easiest, easy to you. Okay, and on 18th there is a single paper. So M3 अगर आपका 10 to 10:40 होता है तो second paper का timing is 2 to 2:40. Okay, and all the test will be conducted on Google Classroom only. Okay, don't worry, your class advisor is Linda ma'am. Take your own time till the evening and you can send the preferences, but unity should be there. There should not be like the इसने ये बोला था इसलिए मैंने वो डाल दिया, इसने हम लोगों को पता नहीं था. Boys will say कि girls ने decision लिया, girls will say the boys ने decision लिया. No, you show your unity and prepare the things. M3 का मैं slot किधर भी हिला नहीं सकती. M3 will be a fix. Okay, M3 will be a 10 to 10:40 on first day, that is on the 17th. But remaining slot आपको कैसे देना है, you can discuss with your class advisor Linda ma'am. Linda ma'am को शाम तक मिल जाना चाहिए कि आपका राय क्या है 17 को. और ऐसे नहीं individually message मत करो. Who is CR from your class? Who is CR? Edwin. This is your responsibility that you take the responses from the each and every one and then send the timing and send the dates and subject name to the Linda ma'am. So evening I will collect from the Linda ma'am only. I will not contact anyone. Okay, understood? Is it clear to everyone? Yes, Any ma'am. doubt? DSA you cannot put. No, ma'am. DSA you cannot put. No problem. DSA will see later on once the lectures will be started. Okay, clear? Any doubt? Ma'am, pattern. Pattern will be a 20 MCQs will be there, and you will get the 20 marks, 20 questions, 40 minutes. Okay, Google Classroom will be a platform for this. Okay, ma'am. Okay. Okay. And Friday we are keeping only one paper because there is electricity problem in this area. Okay. Anita ma'am. Yes. जो पेपर है इनके टोटल 5 पेपर है ना, 5 सब्जेक्ट है ना? Right. तो 5 सब्जेक्ट में से अगर डीएसए नहीं होता तो इसका मतलब 4 सब्जेक्ट हैं. 4 सब्जेक्ट है. Right. तो 2 दिन इनके सिंगल पेपर होंगे और 1 दिन Right. डबल पेपर होगा. Yeah. Yes, sir. Yes. ओके फाइन. Okay, sir. Okay. They will take care, sir. Now that Edwin will contact to the Linda ma'am. Okay. अगर आपका हेल्प लगता है तो Edwin will take the help from the MR sir. No problem. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, is it clear now? Does anybody has doubt regarding that? किसी को कोई doubt है? No, sir. Yeah, so just making giving you as a clarity. So अगर आपको कोई subject बहुत आसान लगता है, so please club it with the on 17th only. 18th will be your single paper and 19th will be your single paper. So DSA as it is not happening. So 18th and 19th में या 17th में तो DSA आप डाल नहीं सकते. So बचे हुए subject कौन से आपके maths के अलावा? You have DBMS, you have PCOM and then you have PCPF. यही है ना 3 subject, और कोई है? Apart from DSA? No, sir. No. So out of this, the subject which you feel as the easiest of them, club it with maths. So अगर आपको DBMS easy लगता है या PCPF easy लगता है या PCOM, I don't think PCOM easy होगा. PCOM will take more time. So उसको आप अलग individual rate पर डाल सकते हो. PCPF या DBMS में से जो easy लगता है वो आप 17th को रख दो और naturally जो तीसरा जो subject होगा वो तीसरे दिन पे चले आएगा. So just decide कि which is the easiest that you have to put on 17th. So वो खाली आपको काम करना है. 18th and 19th automatically आप कोई भी 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट 18th को जाएगा, कोई एक सब्जेक्ट 19th को जाएगा. Okay.
So that is your task. And lastly, जो paper होगा, that is 20 marks का paper होगा. So 20 MCQs होंगे. There will be 20 MCQs, and for each MCQ you will be having only 2 minutes to solve. So total time will be 40 minutes. And जो टाइम है जो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, और उसके अंदर 3 लेवल होंगे. The level 1 will be easier one, level 2 will be little bit moderate, and the last will be थोड़ा difficult वाला. Okay, so on that basis you will be having, but the marks distribution will be similar. So mostly 50% जो आपका paper होगा, यानी 10 question will be very simple. Out of the remaining 10 question, उसमें से 5 question will be moderately difficult, and the last 5 question will be very difficult. So according to that, you'll be given the marks for that. Okay. Yes, sir. Yeah. So, have you done with the program for constructor? Does anybody got the constructor का program? The outcome of the constructor? Okay. किसी को discuss करना है any problem regarding Java के previous 3 program में, which you are not able to do that, compile error आ रहा है या कोई और दूसरा error आ रहा है? Is anybody facing that problem? Okay. If you're not able, हाँ, किसको problem है? सर वो if else मतलब कि while do वाला आप कर सकते हो एक बार क्लास में? While and do while का. हाँ. Okay. So अभी करके दिखाऊं या ये कंस्ट्रक्टर खत्म करके आपको फिर लास्ट में सबके जाने के बाद बताऊं, चलेगा? हाँ चलेगा. Okay. So currently I will just finish up the constructor का program, the program that I've stated. So write a program to calculate the area of rectangle and circle with constructor overloading. Okay. So ये हमें program करना है. I will just quickly erase all these things. Okay. So a class has class name is area. In that class, I am creating a constructor by the name of area. And in that constructor, I'll be passing one parameter, which is int a, and this a will be nothing but your radius that I'm putting. Okay, so yeah, so I'll put int radius is equal to a. Okay, then I'll put int circle area is equal to 3.14 into. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. सर Okay, आप okay, टाइप okay. करो विजिबल. Okay. Yeah. Is it visible now? Yes, sir. Yeah. So circle area is 3.14, which is your value of pi, and then you can multiply with radius and multiplied by radius. Okay. So since the value or the calculation of 3.14 is generally in decimal, so you can replace this end with a double. Okay. So circle area should be made as double. Okay. Once the value has been created, you have to just print the value. So print करने के लिए system.out.println. You're printing the value of the area, area of a circle. So just display that message. Message is the area of circle is plus circle area, semicolon. And similarly, I will just copy this whole constructor and I will create the second constructor. But in this constructor, I'll be having 2 parameters passed into it. Okay, so 2 parameters होगा int a, int b. Int a will be taken as length, and int b will be taken as breadth. Int breadth is equal to b, and we'll be calculating the area of rectangle. So the variable name will be rect area, and over here we'll be multiplying length with breadth. Finally, the area of rectangle is rect area. We have written 2 constructors. Okay, the first constructor has 1 parameter in it. The second constructor has 2 parameters in it. Okay, so after doing that, I'll be creating the main function. So main function can be written down as public static void main in bracket string
args. Then I'll be creating the main function. In the main function, I have, in order to use this constructor, in order to use the method defined in the class, I have to create the object of the class. The object of the class is created by area, which is the class name space object name is equal to new class name with parenthesis. Okay. The parenthesis that I can, the parameter that I can pass in that constructor, I can directly put over here. So if I pass 4, 10, in that case, the length will become 4 and the breadth will become 10. So it will be calling the area of rectangle. Similarly, if I pass area, if I create another object by the name of area A2 is equal to new area, it will, I can use this object for calling the first parameter, first constructor. So I'll be just passing 5 over here. So the area of the circle will become 5. Is it clear? So पहले कौन सा कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल या एरिया, सर्कल? Rectangle. First will be the rectangle and second will be a circle. So I'll just save the program. Okay. So yeah, I'll just go to the command prompt. I'll just try to compile it. एक ब्रैकेट मिसिंग है. So क्लास स्टार्ट किया, एरिया स्टार्ट किया, एरिया एंड किया, एरिया स्टार्ट किया, एरिया एंड किया, मेन मेथड स्टार्ट किया, मेन मेथड एंड किया, क्लास को मैंने एंड नहीं किया. Okay, so I'll just put a bracket over here and I'll try to save it. Okay, I'll just try to compile it again. It has been compiled. एक bracket miss था, इसकी वजह से वो एक error आया. Okay, then I will try to run it. So run करने पे I've got the rectangle का area which is 40 and then I've got circle का area which is 78.5. Is it clear? Is it clear, guys? Yes, sir. Yeah. So this is how we calculate the. We use the constructor. Okay, so just go back to the PPT PDF, basically your syllabus copy, or just go to that. Again, look over here. Even in your PCPF, you have a star pattern. Okay, so the same logic will be used over there. You have Fibonacci series. Yeah. So we'll go into Java. Which programming is basically used in PCPF? Has ma'am informed you regarding that? Shraddha ma'am has informed you. श्रद्धा मैम ने इन्फॉर्म किया आपको? Am I audible, guys? Yes, sir. PCPF में श्रद्धा मैम ने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इन्फॉर्म किया है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए. ये सिर्फ थियरी चल रहा है अभी तक. सर फंक्शनल प्रोग्रामिंग. Okay. So classes, objects, arrays and string. तो हमने reference variable, passing of a parameter to method सीख लिया, returning parameters from method हमने देख लिया, static members हमने already पहले देखा था, non static members हमने already देख लिया है, nested and inner classes ये हमें देखना है. Yeah. So constructor आज हमने देखा, parameterized constructor जो आपने area का बनाया, chaining of constructor and finalize ये हमें देखना है, finalize method को, method overloading हमने देख लिया है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमने देख लिया. ओके, रिकर्शन, कमांड लाइन आर्गुमेंट ऑलरेडी हमने देख लिया है, रैपर क्लासेस और ये सब कुछ चीजें हमें, इनपुट बफर रीडर. या सो हमने स्कैनर देखा था जिससे हम इनपुट लेते थे. देयर इज अ सेकंड मेथड ऑफ टेकिंग द इनपुट व्हिच इज कॉल्ड एज इनपुट बफर रीडर एंड आउटपुट बफर रीडर व्हिच विल बी लुकिंग लेटर. ओके, सो वो होने के बाद कुछ और 2-3 चीजें रह गई हैं जो हमें खत्म करना है, एंड देन विल गो टू एरेज व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, write a program to print the area of a rectangle by creating a class area having two methods. First method is set dimension, take the length and breadth of rectangle as parameter, and the second method named as get area
return the area of the rectangle, length and breadth of the area are covered through keywords. So can you do this program? Can you do the program number 2? यहाँ पे दो मेथड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, एक सेट डायमेंशन करने बोल रहा है और एक गेट एरिया करने बोल रहा है. यानी सेट डायमेंशन वो वैल्यू सेट करेगा व्हिच इज योर लेंथ एंड ब्रेथ, एंड गेट एरिया में वो वैल्यू लेकर के आपको एरिया कैलकुलेट करके देगा. सो इट इज जस्ट लाइक गेट एंड सेट मेथड. अगर आपको याद होगा गेटर एंड सेटर हमने किया था, तो गेटर में वो वैल्यू लेता है, सेटर में वो वैल्यू सेट करता है. तो सेम टू सेम इज ओवर हियर. यू हैव गॉट सेट डायमेंशन जहाँ पे वो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू लेगा यूजर से और वो वैल्यू पुट करेगा वहाँ पे. And get area mein it will calculate the area of the rectangle. So can you try out this program number 2? It is pretty simple and straightforward, I think. Am I audible? Yes, sir. Yeah, so please try to do this program in module number 2, program number 2. Try to do that program, okay? Yes. Program करके देखो, which I think you are able to do that. Write a Java program to illustrate constructor chaining. Constructor chaining will be looking into the next class. कैसे करते हैं constructor chaining, okay? Yeah, write a Java to add a program, okay? बाकी सब मेरे ख्याल से for the array. So we have to study about arrays in order to do the remaining program. Program number 2, program number 1, and program number 3 is pretty simple, and we can still do that. But just try to do the program number 2 in this particular program that you have. Try to do it on your own. Okay. So yeah, we can end the lecture over here. If anybody has a problem, they can stay behind. Rest of you can leave. Thank you guys. Thank you so much.